Hello everybody. So I am Nupur and from Prekas Academy, and today we are going to start with the fourth chapter, that is linear equations in two variables, and this is quite a bit like your polynomials, okay? But it's a bit different obviously, okay? So we are going to learn about we have learned about certain polynomials, certain equations that have been formed using x and y variables. Yes, तो उसी को अब हम आज डिटेल में करने वाले हैं. Now first of all, please tell me what does this mean? Linear equations in two variables. Linear equation means equation which will have a graph of straight line, ठीक है? And two variables is basically in x and y. You will have an equation in two variables, that is in x and y, y and z, basically any of the variables, but two variables will be used. Okay, let's start now. The first is I'm gonna tell you what is a linear equation. ठीक है, सबसे पहले, not in two variables but just a linear equation. So this is a linear equation. Yes. Now first of all, let me please make it very clear to you. आपको ये clear होना चाहिए what is a polynomial and what is a linear equation. ठीक है, जो हम बोलते हैं ना, I told you कि linear equation and polynomials are same, but they are exactly not same. ठीक है, polynomials में क्या होता है? Polynomials में you always write it as 2x plus y. This is a polynomial which we represent it as p of x. ठीक है, but जब हम इस polynomial को, alright, इस polynomial को equate कर देते हैं with zero, when we have an equal to sign, ठीक है, इसको हम कहते हैं linear equation. This is called an equation. कभी भी when your polynomial is equated with a number, be it 0, be it 4, be it 5, ठीक है, जब भी equal to sign represent हो जाता है, ठीक है, equal to के बाद we have a constant number, that is called as a linear equation. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एक linear equation. I hope this difference is clear. ठीक है, this is a very very basic difference, but बहुत important difference है to actually go further. Okay, let's go further. Now this is a kind of an exercise for you, ठीक है, because we have also learned polynomials, so हमें ये better समझ में आएगा. Yes, so let's just start. See, हमें क्या करना है? हमें ये सारे जो equations दिए हुए हैं ना, ठीक है, हमें उन्हें basically convert करना है in this form. ठीक है, ax plus by plus c equal to 0. हमें इस form में ये सारी equations को convert करना है. This is very easy. Yes, आपको समझ आ रहा होगा. The first one, let's take the first one. ठीक है, फर्स्ट वन को मैंने क्या किया, बिकॉज आई वांट टू सी ax, मतलब x के साथ एक कोफिशिएंट होना चाहिए, y के साथ एक कोफिशिएंट होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए. यस, तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? वी हैव 2x, वी हैव 3y, कांस्टेंट माइनस 4.37 इधर ले आते हैं, इक्वल टू 0. दिस इज द राइट टाइप ऑफ फॉर्मेशन. यस, लेट्स सी द सेकंड वन. अब सेकंड वन में देयर इज सम झूल. यस, कैसा है? देखो यहाँ पे वी हैव x क्या, ठीक है, हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, बट वी डोंट हैव √3y ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल टू साइन. यस, तो हम इसको पहले लेफ्ट साइड पे ले आएंगे. सो आई हैव टेकन इट ऑन द लेफ्ट साइड, कांस्टेंट बीइंग ऑन द लेफ्ट साइड ओनली, -4 एंड इक्वल टू 0. सो बेसिकली मैंने रीअरेंजमेंट करी है, दैट्स ऑल आई हैव डन. ऑलराइट, सो द थर्ड वन, नाउ on the left side we have just a constant, but on the right side we have certain variables. तो हम सारे numbers को हम right side पे ले आते हैं, that's not a problem. So 5x minus 3y and minus 4, we take 4 on the left side. Alright, so this is again the formation. Now for the fourth one, the last one, what have I done? We have 2x, then I can pick my y from right side to the left side. So 2x minus y equal to 0. There is no constant is a 0. And so this is also the correct form of this type of a formation. Okay, ये just आपको एक brush up करने के लिए था that how to actually form a linear equation. ठीक है, ये linear equation form कैसे होती है, and this is the way we actually learn a linear equation. हम लोग actually इसी form में linear equation को learn करते हैं कि ऐसी ही linear equation होती है of this form. ठीक है, let's go further. Now, as I told you, हमने देखो आपके जो चैप्टर्स है ना, दे आर अलाइंड इन सच अ वे दैट यू विल एक्चुअली सी अ पैटर्न इन ऑल द चैप्टर्स. ठीक है, जैसे जैसे हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल करा,
because that was required. आपको उन्होंने वेरिएबल्स के साथ कैसे एक पॉलिनोमियल बनाते हैं वो समझाया, फिर उसके बाद उसको कैसे एक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं. देन उसके बाद वी ऑल्सो डिड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेयरइन आई डिड हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस टू दिस. वी हैड एक्चुअली प्लॉटेड अ ग्राफ ऑन दिस इक्वेशन. हमने इसी इक्वेशन का ग्राफ बनाया था एंड वी हैड सीन कि हम कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, देन उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करके कैसे एक लाइन बना सकते हैं. यस, सो ऑल दीज चैप्टर्स आर एक्चुअली अलाइंड विद ईच अदर. आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे चैप्टर्स करने हैं सो दैट एक्चुअली आप जब तक यहाँ पहुंचो यू शुड एक्चुअली बी वेरी वेरी क्लियर विद ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, ओके. अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाई आई एम टेलिंग दिस ऑल. ठीक है, देखो, वी हैव टू फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, ठीक है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं. आई टेल यू कि कैसे वी फाइंड आउट कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं. ठीक है, उसकी भी एक ट्रिक होती है. आई टेल यू दैट आल्सो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर. बट फॉर नाउ, अभी के लिए वी हैव टू जस्ट फाइंड टू सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन. हाउ डू वी फाइंड? यू रिमेंबर द टेबल सिस्टम वी डिड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आपको याद होगा टेबल सिस्टम जो हमने किया था, मतलब क्या किया था हम लोगों ने, x एंड y इस तरीके से लिख दिया था. फर्स्ट वी टुक x as 0 and we took out y, and then we took y as 0 and took out x, if you remember that. What did we do in this equation? ठीक है, सबसे पहले मैंने x को 0 रखा. What will I get? y as 4. I have written 4. ठीक है, now then I'll put my y as 0. What will I get? x. y as 0, x. So these are the two solutions of this equation. I hope this is clear. बस यही कॉन्सेप्ट आपको बाकी दोनों में भी लगाना है. हाउ डू वी डू इट? लुक एट हियर, देखो, 2x plus 5y is a 0. yes, तो हमें इसमें दो सॉल्यूशंस निकालने हैं. हाउ कैन वी डू इट? सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट x as 0. ठीक है, x को मैंने 0 करा. आई कैन सी y also is 0. yes, because equal to 0 there is no constant, तो y भी 0 आ रहा है. so my 0, 0 is one solution. and if I put x as 1, let's see x as 1 को क्या पुट करके आता है, तो it will be -2/5. yes, so these are the two solutions. so इसको हम एक्चुअली कैसे लिखते हैं? there are two solutions, तो हम कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं? I told you in coordinate geometry. कैसे? 0, 0. so this is my abscissa, this is my ordinate. again इसको कैसे लिखूंगी मैं? this will be 1, -2/5. I hope this is clear. this is again abscissa, this is again ordinate. अब आपको समझ आया why these chapters are aligned in such a way in NCERT? ठीक है, because these are really linked to each other. Last हमारा था, last was this one, right? 3y plus 4. yes, तो इसमें कोई x वेरिएबल नहीं है. so what we can do, look here, what we'll do is, यहाँ पे मैंने x को 0 लिया. ठीक है, and y I got as -4/3, and 0, 0 can also be a solution. yes, क्योंकि अगर मैं x को 0 लूंगी y 0 ही होगा, because x का वेरिएबल ही नहीं है उसमें, so this can also be a solution. yes, so we have got two solutions. I hope this full concept is clear to you, because this concept is important and this concept is actually repetition. yes, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट किया था. ठीक है, तो वही रिपीटिशन है इस कॉन्सेप्ट का, एंड आपका रिवाइज हो गया होगा वो कॉन्सेप्ट. ओके, और ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली यू विल सी इन एनसीईआरटी. ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है एंड द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज. तो यू विल एक्चुअली सी, लुक हियर, कि ये क्वेश्चंस एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमने किए थे. सो दीस आर एक्चुअली रिपीटिशंस. ठीक है, so this will be very easy for you. Okay, now the new thing that I'm gonna today make you learn is how to know whether an equation will have how many solutions. मतलब कितने solutions हो सकते हैं एक equation. ठीक है, whether it will have a unique solution, or it will have no solution, or it will have infinitely many solutions. I hope these words are very clear to you. Unique solution मतलब one solution, it will have just one solution. No solution means that equation can never have any solution. ठीक है, and infinitely many solutions means many solutions, many solutions. ठीक है, infinite solutions हो सकते हैं. हम we can keep on finding out solutions for that. ठीक है, now I'll tell you one thing. In coordinate geometry, we plotted certain graphs. Am I clear? हमने कुछ graphs plot किए थे. yes, so when we actually plot those graphs, उससे भी हम लोग actually कुछ solutions find out कर सकते हैं. yes, because when we plot graphs,
we can actually know कि how many numbers, how many coordinates are there on that line. Like for example, I'll tell you कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ. ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है. Let's just draw a graph, just a basic graph. I'm telling you कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि we will have infinite, I mean we can find solutions by graph also. Like for example, I'm just plotting a very random type of a graph, ठीक है. I have a point over here, and for example I have a point over here, and if I draw a line like this, and I'll see कि ये जो है ये एक line बन रही है. Now on this line, this can be an equation of some plot of some equation. Yes, so this can be some equation का some plot, ठीक है. So I'll tell you ये किसका है. This is x minus y 0 equal to 0 का ये plot है. Now I'll tell you one thing. इस equation, इस plot पे, this is also solution, this is also solution, this is also solution. So जितने हम points इस line पे lie करते हैं, all are solutions of this equation. Yes. एक तरीका है, you can actually plot it and then you can find the solution, ठीक है. But इस chapter में we don't do that, ठीक है. हम इस chapter में और एक method सीखेंगे which is easier than this, जो इससे easier है, ठीक है. ये graph से easier method है, ठीक है. Let's learn first. अगर हमें सबसे पहले we are actually assuming, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास we have two types of equations, that is a1x plus b1y equal to 0 equal to c1. This is my first equation, ठीक है. a2x plus b2y plus c2 is my another equation. So we have two equations, ठीक है, and we are gonna do with that, ठीक है. So let's just start, ठीक है. Okay. 1 second. Okay. Now it has got stable now. Okay. Now look here. We are now gonna learn about the first, that is unique solution. ठीक है, हम लोग unique solutions कैसे बना सकते हैं, that we are gonna learn, ठीक है. Let's start. So first is our rule number 1. What is the rule? What we have to do? We have to actually check for a1 by a2, b1 by b2, and if they are not equal, then it is a unique solution. I hope this concept is clear. क्या किया मैंने basically, if I look at the two equations I have, ठीक है, यहाँ पे what have I done? I have basically divided my first x का coefficient by second equation के x के coefficient के साथ, and y के coefficient का y another equation के y के coefficient के साथ. And if they actually the ratio comes to be different, then it's a unique solution, ठीक है. This concept has to be remembered. Okay. Now for no solution, what do we have to do? हमें क्या करना है? For no solution, we have to basically see this rule. What is the rule? a1 by a2, b1 by b2, and c1 by c2. We have to find. Now, a1 by a2 will be equal to b1 by b2 and will not be equal to c1 by c2. ठीक है, हमें ये try करना है that a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. तो ये रेशियो आपकी अगर satisfy हो रही है, that means कि आपका no solution, ठीक है. And the last, that is infinitely many solutions. क्या है? Infinitely many solutions. So how do we do infinitely many solutions? See, यहाँ पे we have a1 by a2, ठीक है, b1 by b2, c1 by c2, and all the ratios are same. If all the ratios are same, it is an infinitely many solution. इस equation के infinitely many solutions, ठीक है. These are the rules you have to learn. ये सारे rules आपको learn करने हैं, by heart होने चाहिए ये सारे rules. If they are not by heart, तो आप question solve नहीं कर सकते हो. Alright, so you have to learn these rules. These are very easy rules, ठीक है. अब देखो, मैंने कुछ equations लिए हैं, and these equations are almost similar, but obviously there are certain tweakings so that आपको समझ में आए all the different things, that three things I have taught you, ठीक है. So the first equation is 2x plus 3y equal to 7 and 4x plus 5y equal to 10. We'll have to check कि इन दोनों को अगर मैं solve करूंगी, ठीक है, तो मेरे को no solution मिलेगा, unique solution मिलेगा या infinitely many solutions मिलेगा. So let's just try, ठीक है. मैंने क्या किया? सबसे पहले I have tried out for a1 by a2, that is coefficient of x of first equation divided by coefficient of x of another equation, ठीक है. That was 2 by 4, that is 1 by 2. Then b1 by b2 I have tried, that is 3 by 5, okay.
Now these are different. हम पहले ही देख सकते हैं that ये different है. That means if they are different according to the rule, it has unique solution. Unique solution मतलब अगर मैं दोनों equations को solve करूंगी आपस में, I'll tell you how to solve also. ठीक है? उन दोनों equation को solve करके how can I get solutions? But अभी के लिए you just have to know this कि इसके सिर्फ एक ही solution होगा. X and Y का सिर्फ एक ही coordinate होगा जो दोनों equations को satisfy करेगा. Alright? Let's see the second question. Second question क्या है? Second question is 2x plus 3y equal to 6, 4x plus 6y equal to 10. ठीक है? Now we'll check for these two equations. ठीक है? Let's see. I have calculated a1 by a2 again. That is 2 by 4. That is 1 by 2. Then I have calculated b1 by b2. That is also 1 by 2. मतलब अभी a1 by a2 is equal to b1 by b2. इसका मतलब मेरे को c1 by c2 भी check करना पड़ेगा according to the rule. So मैंने C1 by C2 चेक करा. Oh God, this was different. That means मेरा रूल क्या बना? A1 by A2 is equal to B1 by B2, but is not equal to C1 by C2. ये रूल किस में satisfy करता है? This actually satisfies for a no solution. ठीक है? इसका मतलब अगर मैं इन दोनों equations को simultaneous solve करूंगी, मेरा कोई भी solution नहीं निकलेगा. यानी कोई भी x और y का ऐसा value नहीं निकलेगा जो दोनों equations को satisfy कर सके. All right? The third one. Alright, the last, that is 2x plus 3y equal to 6, 4x plus 6y equal to 12. Let's just check कि इसके कितने solutions हैं. ठीक है? Let's just see. What have I done? a1 by a2 is 2 by 4, again 1 by 2. b1 by b2 is also 1 by 2. Okay, let's see for c1 by c2. Oh! c1 by c2 is also 1 by 2. That means a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. This actually is a rule for infinitely many solutions. इसका मतलब इन दोनों जब हम equation को solve करेंगे simultaneously, I'll get many solutions which I cannot define as well. ठीक है? So this is the rule that you have to learn and please learn all these rules. ठीक है? ये rules बहुत basic हैं but these are really important. ठीक है? And बहुत handy होते हैं rules for further also. आगे भी जब आप 10th 11th में maths करोगे, this is actually really very important. ठीक है? These rules are important. And I hope आपको आज का lecture समझ में आया होगा. I have tried my best to make you understand this lecture today. Okay, I'll take a leave for tomorrow. Today, I'll see you tomorrow. Okay, and if you have liked the session, please like, share, and subscribe to our channel. And for more such videos, and I'll see you tomorrow. Till then, bye bye.